So we were talking about some ester linkages in the last class, and we already talked about that. कि आपके पास जब कभी भी कोई भी ester linkage बनेगा, वो कैसे बन सकता है? If you have any acyl chloride, and these are H's, right? And if you have alcohol along with that, तो क्या होगा आपके पास बच्चों? आपके पास the H and this Cl is going to make a compound HCl, and if you want to write the observation of this, so it should be steamy fumes, right? Whenever HCl forms, it would be steamy fumes over there. And बचा क्या आपके पास? ये acyl chloride में से आपके पास ये कार्बन्स बचे और अल्कोहल में से ये पार्ट बचा. So they just combine together and form ester. So what is the name of this ester? We have two carbons in the alcohol chain, so it is ethyl, and we have 4 carbons over here in the next chain, which is along with you can say that acyl chloride, so it should be butanoate. Right बच्चों? ऐसे किया था हमने? Yes sir. ठीक है, अब एक्चुअली हम जा रहे हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि क्या है आपके पास? If you have acyl chloride and if you are going to react it with phenols, तो फिर आपके पास कैसे बनेगा? Right, you need to keep remember that phenol is actually not a good nucleophile. It is not actually a good nucleophile. Just because of the it's all just because of the delocalization of electrons into the ring, right बच्चों? Yes right sir. So for this you must need to use NaOH. आप NaOH use करेंगे ताकि ये phenoxide ion बना ले. When it forms phenoxide ion, then we can make a reaction with acyl chloride. So first of all, what you need to do, if you have phenol, so you need to keep remember that the lone pair of phenol, this lone pair of oxygen, is actually delocalized into the ring. It is actually delocalized into the ring. So we already know that because we already talked about phenol. So you need to keep remember it is not going to directly react with acyl chloride. We need to convert this into phenoxide ion first. So we will react it with NaOH, right? When you react it with NaOH, so it will form what? It will form O and A along with the water molecule. We know this, right? And this is what actually when you remove Na from here, so it would be phenoxide ion. Otherwise it is sodium phenoxide. अगर आप सोडियम के साथ इसको करते हो तो it is sodium phenoxide, और अगर आप इसको सोडियम हटा के बात करते हो it is phenoxide ion. जब आप ये ऐड करोगे तब रिएक्शन हो सकता है. For suppose now I have acyl chloride like this, and if I am reacting it with sodium phenoxide, so now the reaction is possible. So you will see that the Na and Cl combine together and form NaCl. The rest of the molecule is going to be joined together. It should be like this, right बच्चों? Yes sir. Yes, Azir, is that clear bete? Rabel, is that clear bete? Yes sir, clear. Any problem? No. Okay, so let's move to the next step. For suppose now I have phenol that's on its place. I have phenol, right? But this time I don't have, for suppose I don't have acyl chloride. मेरे पास क्या है? मेरे पास benzoyl chloride है. For suppose मेरे पास यहाँ पर भी बेंजीन है, ठीक है ना? और यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. I have this one. So if I want these two be reacting together, so what I need to do, first of all, I need phenol in NaOH. मैं इसको पहले NaOH में reaction कराऊंगा, so it would be converted into phenoxide ion first. ये सोडियम phenoxide बना लेगा. जब ये बना लेगा,
then these two can react. तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये कंपाउंड. तो this O and then this is what, acyl chloride you have, and they combine together like this, and you will have NaCl along with that. Right, बच्चों? Yes, sir. Any problem? No, sir. Now, for suppose, I have what? I have this thing, बच्चों. I have this one. I have this one, and I want what from you? I want from you guys that कि आप इसको बना के दिखाओ मुझे कि अगर मैं ये बनाना चाहूँ, for suppose अगर मैं ये कंपाउंड बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? What are the steps जो मुझे करने होंगे इस कंपाउंड को बनाने के लिए? जरा जल्दी से इसको मुझे बना के दिखाइए. कोई रिकॉर्डिंग में बाद में आप लोगों को काम आएगा. सही है. तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई एसाइल क्लोराइड है, कोई सा भी एसाइल क्लोराइड है, अगर वो किसी भी अमाइन के साथ मिलता है, किसी भी अमाइन के साथ, ठीक है ना, फॉर सपोज CH2 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 CH3, यू नीड टू कीप रिमेंबर जैसे एस्टर लिंकेज बना था तो वहां से H और एक जगह से Cl और एक जगह से H जा रहा था, यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन होगी. यहाँ से भी एक जगह से Cl और एक जगह से H जाएगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, HCl. बट यहाँ लिंकेज जो बनेगा इट शुड बी एमाइड लिंकेज. ये जो होता है ना C डबल बॉन्ड O NH का जो लिंकेज होता है इट इज एक्चुअली एमाइड लिंकेज. तो ये बन गया आपके पास एमाइड लिंकेज. एस्टर की तरह एमाइड लिंकेज भी बन सकता है और इसका नाम भी वैसे ही रखेंगे जैसे एस्टर में रखते हैं. ये वाले 4 कार्बन पहले, फिर इट इज ब्यूटाइल, ठीक है, और ये वाले 2 कार्बन बाद में, तो ये हो गया इथेन एमाइड. ठीक है बच्चों. You can name them as like N-butyl ethanamide, right बच्चों? Yes, sir. अब इसके टोटल रिएक्शंस आपने कितने देख लिए? Just draw this as a review map, so it will be useful for us at the time of revision. So पहला रिएक्शन आपने ये किया कि for suppose अगर आप ऐसे किसी एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे करा दें, अल्कोहल से करा दें. अगर आप इसका रिएक्शन किससे करा दें, अल्कोहल से, एंड इट शुड बी लिक्विड, पानी नहीं होना चाहिए. इथेनॉल से रिएक्शन करा दें तो हमारे पास एस्टर लिंकेज बन जाएगा. ये CH3 will remain on their place, C double bond remain on their place, and then it should be O C2H5, एस्टर बन जाएगा. ठीक है ना, इट शुड बी एस्टर. एसाइल क्लोराइड एस्टर बना लेगा आपके पास. और अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, वाटर के साथ कराते हैं, तो वाटर के साथ कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, इट शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बन जाएगा बच्चों ये, इट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड. यू कैन से दैट कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. ठीक है. और अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, यानी कि अमोनिया गैस के साथ, अगर आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, एक्वस हो या गैसियस हो या लिक्विड हो, सो इट विल फॉर्म व्हाट, ये बना लेगा आपके पास अमाइन. ठीक है. क्या बना लेगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, एमाइड बना लेगा ये. ठीक है भाई, इट वुड बी एमाइड. उसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हो, इसका रिएक्शन अगर किसी एमाइन के साथ कराते हो तो ये अलग अमाइड बनाएगा जिसमें N के साथ जो है आपके पास कार्बन की चेन भी लगी हुई होगी. तो अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं C2H5 NH2 के साथ एंड इट शुड बी aqueous, तो आपके पास क्या होगा, CH3 will remain on its place, C double bond on its place, ये बन गया amide along with C2H5 वाला amide. So it is also amide. It is also amide. The difference is ये वाला जो है आपके पास सिंपल, ये है आपके पास इथेन एमाइड, और ये वाला जो है आपके पास क्या है, ये एन इथाइल इथेन एमाइड हो गया. ठीक है बच्चों, राइट. इसका नाम Yes, क्या होगा, शुड बी इथाइल इथानोएट, और इसका नाम क्या होगा, इट शुड बी इथानोइक एसिड. एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर कि अगर इससे इसमें जाना चाहते हैं, अगर इससे वापस जाना चाहते हैं, यू नीड टू यूज PCl5 रूम टेम्परेचर पर,
Otherwise PCl3 और SOCl2 में से कोई एक यूज कर सकते हैं, and for this you need to heat. Right बच्चों? Yes, sir. Any problem to any one of you? No, sir. Over here, the organic chapter for A2 has been over, right? आप क्या करना है, आपको AS की organic भी review करनी है,